Hello, everybody. I'm back. Dr. K. Agarwal, President, Heart Care Foundation of India and Confederation of Medical Association of Asia and Oceania. And you are watching Med Talks with Dr. K. Agarwal. Another milestone. This is our 150th non-stop daily 7 p.m. show. 150th. And every time we are bringing you something new. And today also we will bring you some lateral thinking, something new. But before that, let's have the headlines of the day. Moderna COVID vaccine, 19 vaccine, and likely to be cleared by FDA tomorrow. The preliminary report submitted by the staff of FDA has been positive. The WHO has assembled a small team of experts to investigate the origins of the coronavirus, which plans to sift through samples and medical data from China. The French pharmaceutical firm Valneva will start the first clinical trial of its COVID-19 vaccine candidate at 4 sites in England. They are developing an inactivated whole virus vaccine similar to the Sinopharm in China and Bharat Biotech in India. The mammoth task of training healthcare workers for COVID-19 vaccination drive has begun in Delhi. Around 3,500 health workers have been identified in the national capital to carry out the vaccination process. India's active COVID-19 caseload has fallen from 3.4 lakh, which is a mere 3.43 of the total infection, with a recovery rate of over 95%, which is among the highest in the world as on today. Before we go to the subject of the day, let's do our ritual. Whenever we invite any guest and have a face-to-face meeting, we need to follow the ritual of hand wash. So let's take the gel from our partner and let's say S for Seedha, U for Ulta, M for Mutti, A for Angutha, N for Nakhun, and K for Kalai. And now all set to invite our guest today, Dr. Rahul Pandit. He is a director intensive care at Fortis Hospital in Mumbai. He is a visiting consultant ICU at Bathurst Hospital and Wagga Wagga Base Hospital, Australia. He is the Vice President of Indian Society of Critical Care Medicine. He is a member of the COVID-19 Task Force of Maharashtra government. More than 30 original publications and 32 book chapters to his credit. Our job of today's discussion is going to be on a specific lateral thinking drug. We have been telling you that we are bringing you all types of positive, possible newer drugs in COVID-19 with the basic aim, reduce the mortality to as low as possible. We know that in this condition, the virus enters the cell, alveolar cell or the endothelial cells. This virus causes polymorphs to release and lymphocytes gets consumed. Poly means neutrophils. Any cell which has granule is a poly cell, which can be basophil, neutrophil, which can be eosinophil. So they contains the granules which can kill the virus. And then there are lymphocytes, which is a Th1 response. And these lymphocytes are the one which produces ultimately TNF alpha, interleukin 1, and ultimately the CRP. Lymphocytes gets reduced because they are consumed in the circulation. If, like in a cancer, when there is neutrophils are low, you use a drug called Neupogen, which is a granulite stimulating factor, and increase the count. Here, the lymphocytes are low, like in HIV. And in that situation, if you can increase the lymphocytes, which are called CD, CD4, and CD8 cells. In HIV, we have low CD4 count.
In this condition, we have lower CD4 and CD8, but much more lower CD8 counts. By any way, by a plant, by a diet, by yoga, by medicines, by vaccines, can we increase the CD8 count? And today we will have an interaction of one of the trial conducted by Dr. Rahul Pandit in Mumbai, where he has shown that a recombinant technique using a natural hormone can increase the CD4, CD8 counts, and you may be able to save lives who are critical, where the CD4 and CD8 count has not naturally recovered by day 7, indicated of a very high viral activity. Over to you, Dr. Rahul. He'll give a 20 minutes presentation and then we will have a discussion. And in this, I may also invite a couple of people who may like to talk on this particular issue. Over to you, Rahul. Thank you very much, Dr. Agarwal, and it's an honor to be a part of your 150th live show. Thank you very much for having me on this show. I will share my screen now, sir, with your kind permission. Okay, Yes. so today I'm talking about this molecule called as thymosin alpha 1. Now, uh, the points of discussion over the next 15 minutes of talk would be what is thymosin alpha 1? How is it acting? What has it been used against the several diseases? And what is its applicability in treating these various diseases? A few papers which have come out, there is not a lot of literature. Some of the dosages which are commonly used and side effects. So this is how I've sort of panned up my talk. And then after the side effects, I've got a couple of slides of my study. Obviously, I'm not able to share the entire study outcome today because it is awaiting a publication. But I've got the few important ones which I will definitely do show. So thymosin alpha 1 is a protein molecule which human body, the thymus gland, is known to basically naturally make. And we basically know that the thymus is active within the first 8 to 10 years of life, and after that, the activity sort of doesn't remain the same as it was in our childhood, and it is responsible for basically the restoration of the immune function. We know that the animals lack it, and that's why basically it has been found to enhance cell-mediated immunity in humans as well as in experimental animals. Now, the main important role of thymus gland is nurturing the T cells. Now, these T cells are the ones which are very, very important for the immune response which we have. And we know that the T cells basically are the ones which are the important ones for COVID fight as well. How does it act? It's got a primary mechanism and it's got a secondary effect as well. A primary effect is there are the stem cells through which you actually have the bone marrow cells through which you produce these different types of cells. In presence of the thymocytes, basically they start producing the activated T lymphocytes, which are also called as the helper memory effector killer suppressor cells, natural killer cells, and all those things. And the secondary effects are the antibodies which it produces. And you can see these different types of antibodies, the lymphokines, the interferons, the interleukin 2, the high affinity interleukin 2, so on and so forth. So what happens essentially is that because it has got a direct immune modulating effect as well as a direct cellular level effect, it basically helps us in fighting infection. We also know that a lot of cancers now, and this is coming from the cancer research, are basically dependent on these immune responses as well. Hence, it has basically got some role probably in tumor destruction or in treatment of the cancer as well. We also know that because it has got this property of producing antibodies as well as some of these interleukins and stuff, it probably may be inhibiting the viral replication. Now, that's not really proven, but that's an hypothesis. And this has basically been also extrapolated to help kill the bacteria, fungi, and the viral infection. Because we know that these natural killer cells and the helper memory cells, which are there, would basically help us to do that. And based on that,
there are three potential benefits or three potential avenues for us to explore this drug. The first one being immunoregulation. So basically, immunoregulation, which comes down to the fact that by stimulating the natural killer cells and the cytotoxic lymphocytes, the CD8 cells, thymosin alpha could basically improve our T cell count and also maybe kill virally infected cells. It also has an anti-tumor property, which may be used as an anti-proliferative agent for specifically for metastatic diseases, and it may have a antioxidative effect or damage effect as well. I've got some papers, and there are plenty of references in cancer. So the predominant use of thymosin alpha has been in patients who have cancers, which are associated with significant deficiencies in the cellular immunity. And it seems that the drug was basically started to be used in these group of individuals. It basically demonstrates a decrease in the tumor growth. It has got a therapeutic effect in several types of cancers, and when combined with chemotherapy, it basically produces a better effect as opposed to just giving a chemotherapy. Now, what are the cancers which they have looked at? They have looked at lung cancers. They have looked at stage 4 melanomas. They have also looked at some other metastatic cancers like breast cancers and hepatocellular carcinoma. In hepatocellular carcinoma, specifically, if you are going to do a transarterial chemoembolization, hepatocellular carcinoma is a cancer of the liver, where one of the treatment modalities that you actually go through the arterial system and you actually go and embolize or completely destroy the tumor. If you give thymosin alpha along with that, you actually have a better survival and a better tumor response, is what some of the studies have shown. And I've given the references below there. Uh, Now, in cancer immunotherapy, again, basically it induces a class 1 expression in the tumor cells. Thus, it makes it possible for the tumor cells to be visible to the T lymphocytes. And the T lymphocytes are the ones which will actually destroy these cells again. Again, as I said, in the non-small cell cancer of the lung, it basically has got a similar effect where it blocks the proliferation. That means the growth and migration, and might work with an anti-PD-L1 antibody to enhance the immune response against the tumor. In bone marrow cultures and in bone marrow cancers also, it has basically shown some amount of effect. So I think there is enough data in cancer therapy to basically look at changing it from a cold tumor to a hot tumor, and then basically on acting on the cells because of which. I'm just going to jump this slide. It's a very busy slide. Come up to some of the better papers which basically have been talking about this. Now, this is a paper which basically says that one of the major interests of potential application of thymosin alpha has been represented by tumors in belief that thymosin alpha could restore or potentiate an immune response which was suppressed by the tumor. It looks like a promising therapy, turning a cold into a hot tumor and promoting cell infiltration to increase the efficacy of the inhibitors and potentiating the treatment. So it basically looks at the same problem in immune response as well. Now, HIV, and Dr. Agarwal asked me a few days ago, do you have data in HIV? I will be very honest. I had actually not gone into the HIV context because though it is a viral thing, I was not very sure whether there is an applicability of this in HIV or not. But at the research level, there are around 10, 12 studies which have looked at the use of thymosin alpha in HIV. And here, basically, it is the CD4 counts, which essentially is what the thymosin alpha is known to increase your CD4 and your CD8 counts. And by increasing your CD4 counts, obviously it gives you a much lesser reaction, much lesser, the what we call as the immune reconstitution syndrome, which happens with patients who are on antiretroviral therapy. It sort of tries and controls that a little bit more. In a small group of patients with low CD4 count, they appear to have a lower risk of going into full blown AIDS if thymosin alpha was used. But this is all at research level. There is no real therapeutic data which is available right now for use of thymosin alpha in HIV. Though there are a lot of mechanisms postulated like CD8 activity, CD4 cell count recovery. It will probably stop microbial translocation because of its action, because of natural killer cell stimulation. It may improve your immunity, it may increase your bone marrow output and so on and so forth.
but really it has not translated into an active treatment regime yet. So these are some of the multi-center retrospective cohort studies which have looked at HIV patients as well as COVID patients, and this was the one study which came out in 2020 November, which looked specifically at COVID-19 patients. This is a study from China, where basically a 28-day decrease in mortality was seen in patients who had COVID-19, especially who were elderly, 64 years of age and above, and whose white cell count, which is the absolute total white cell count, was 6.8 thousand, and a lymphocyte count was less than 1,000, which was always 0.73. And you can see that the PF ratio, which is your PaO2 upon FiO2 ratio, which sort of determines how serious the patient's oxygenation is hampered, was in the moderate range. So less than 200 we call as moderate range. And the Apache scores and the SOFA scores were not spectacularly high, but obviously they are never high in these patients. As I said, there is another theory which is coming up in sepsis as well. We know that these natural killer cells would basically have some form of a action on the bacteria as well as fungi as well. But again, this has not translated into therapy right now. These are all repurposed medicines being used. And this is another paper which talks about all-cause mortality will decrease in sepsis in septic patients when thymosin alpha was used either alone or in combination with another anti-inflammatory agent, ulinastatin, which has also been used now in COVID-19 patients quite a lot, and they seem to have a better mortality in sepsis group. Another one, which is the hepatitis B. So again, the basic response here is the T cells and the helper cells, basically, which are believed to be responsible for elimination of hepatitis B virus, are activated, and thereby we have a better outcome in these patients who have got active hepatitis B. Some of the dosages which have been basically summarized here is the vial comes into a couple of sorry, I should not have basically given the dose of COVID-19 as well here, but I will mention that it's a 1.6 milligram per mil vial which comes in, which has to be diluted with a diluent which comes in. Hepatitis B is twice weekly for 6 months. Hepatitis C is twice weekly for 6 to 12 months. And as a cancer therapy, it is basically given between the chemotherapy cycles, and the duration can be variable. So, what are the side effects? Uh, it is extremely well tolerated. There is enough data since 1980s, 1970s to basically talk about the tolerability of thymosin alpha. It is tolerated in patients who have got deranged renal function as well as hepatic function. It is tolerated in patients who have got sepsis as well. It is tolerated in patients who have got multi-organ dysfunction as well. The only side effect which basically has been seen is the injection site redness, which usually does not cause a lot of problem. So it seems to be a reasonably safe drug to use. In COVID-19, there are three dosages which have been basically talked about. For mild patients, they talk about 1.6 milligram to be given once a day. For moderate patients, 3.2 milligrams twice a day. And the duration of the therapy is for 7 days, regardless of which category you are in. And the severe patients, which are our ICU patients, who are either on ventilator or who are on very high oxygen requirement, or who have more than one organ dysfunction, there the dose is 3.2 milligrams 3 times a day for 7 days. And this is how basically the dosage comes across. This is the study which we started up. We got it registered with the CTRI. We started up in the month of July. We recruited our first patient after the protocol was basically registered. And the primary manifestation, as we know, of COVID-19 is respiratory tract. And we also have some data emerging that we may have a multi-system involvement as well. We also know that some of these patients have very high level of pro-inflammatory cytokines and chemokines, and cytokine storm seems to be the more dangerous part, potentially life-threatening event which COVID-19 sustains. While we can debate around that, but that's what basically happens, that whenever the patient deteriorates, your cytokines do go up. So we sort of had a single center prospective clinical study, an exploratory study to evaluate the effectiveness and safety of thymosin alpha in severe COVID-19 patients. So I basically used it only in ICU patients.
and the duration of the therapy was 7 days. And all of these patients were followed up to 28 days. If they were discharged, there was a telephonic follow-up which was done at the end of 28 days. Uh, During screening, we obviously explained the procedure to the patient. If the patients were in ICU and were not in a position to give consent, vis-a-vis the patients who were on ventilator and sedated, the next of kin consent was sought in person. The patient was the family member was met by myself, and we actually discussed it and took up a written consent. As soon as the patient was awake and was able to have a compos mentis discussion, we went ahead and did a retrospective. So we went ahead and did the consent of the patient as well. So these were the timelines which we looked at, the activities which we looked at. Hospitalization, informed consent. We took up demography for all patients, medical history, physical exam, vital signs, chest X-ray, clinical lab test, biomarker assessment, which was done on day 1 and day 7. Clinical progression, which was done again on day 1 and day 7 on an 8-point ordinal scale. We looked at the oxygen requirement, which was done all along from day 1 to the day 7 every day, and SpO2 requirement, respiratory assessments. And obviously, we looked at the concomitant medicines which were given. The concomitant medicines were standard as per the ICMR guidelines and as per the Maharashtra Task Force guidelines. We basically went ahead with the standard therapy which was talked about. The primary objective was efficacy and safety, and the secondary objective was basically to look at any associated clinical response and to see how safe it was in COVID-19 patients. These were the aims and objectives. Pretty standard. There was nothing really different in the way we actually conducted the study. But we did look at change in ferritin levels, IL-6 levels, LDH, CRP, D-dimer from the baseline, and we looked at change in the SpO2 levels from day 1 to day 7. And obviously, the big thing which was CD4 and CD8 count from day 1 and day 7, and we basically followed those patients up. These are just the two slides on the results. This is my CD4 slide. We had a mean CD4 count of 367 at the screening or the baseline day, which was day 1, which changed to 558 at the end of the study period. And the p-value was 0.008, which was highly, highly significant, with a standard deviation of around 166 on day 1 and around 177 on day 5, or day 7, beg your pardon. And this is my CD8 count, 510, which increased to 720. Again, a statistically significant result. The mean value changing between 199 to 230 on a standard deviation between day 1 and day 8. And obviously the other results I'm not able to show you right now, but this is essentially what we did. And I can tell you that most of our patients, the primary objective which was there, which was to actually get our patients CD4 and CD8 counts better, was essentially sorted out quite reasonably well. Thank you, Rahul, for bringing out another new thing as a lateral thinking. जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि हमने पहले मोर्टेलिटी रिडक्शन के लिए बेरिसिटिनिब की बात करी. हमने डॉक्टर रोहित अग्रवाल को पिट्सबर्ग से बुलाया और उनके एक्सपीरियंसेस को सुना. फिर हमने डॉक्टर रसल रिटर को बुलाया. तो मेरे साथ में डॉक्टर शशांक जोशी थे, एंड वी टॉक्ड अबाउट मेलाटोनिन इंट्रोड्यूसिंग द मोर्टेलिटी. And now today we are talking about thymosin alpha with Dr. Rahul Pandit. हर वो चीज जो नई है और जो किसी की जान बचा सकती है, हम इस प्लेटफॉर्म में आपके सामने लाते रहेंगे. डॉक्टर राहुल से मैं सवाल जवाब करने से पहले जो इन्होंने कहा, मैं उसको थोड़ा सा आपको एलोबरेट कर देता हूं. हमारी बॉडी में थायमस होती है. थायमस का काम है, जब हमारा बच्चा पैदा होता है, एवरी वायरस फॉर दैट चाइल्ड इज ए नोवल वायरस. सो नोवल वायरस, एवरी चाइल्ड वायरस आता है और थायमस ग्लैंड उसके लिए सेल्स बनाती है और उसके लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बनाती है, उसकी मेमोरी सेल बनाती है. यानी कि थायमस का काम है FIR लिखना. हमारी बॉडी में हर कोई वायरस आएगा, उसकी FIR जो पुलिस स्टेशन है वो थायमस ग्लैंड है, वो FIR लिखेगी और एक मेमोरी सेल बना देगी कि भाई ये वायरस दोबारा आया, तुम्हारा काम है ये वाली एंटीबॉडीज बना के, ये वाली पुलिस बना के उसे कंट्रोल कर दो.
जब लगता है थाइमस को कि सारे वायरसेस दुनिया के एफआईआर लॉन्च हो गई, खाली बैठा है, तो वायरस कहता है कि जैसे सरकार होती है वो कमेटी बंद कर देती है, हमारी बॉडी थाइमस को खत्म कर देती है और एडल्ट के अंदर में वो थाइमस नहीं होती। और अगर कोई नया नोवल वायरस आ जाए जिसको कभी किसी के थाइमस ने नहीं देखा है, यानी कि कहीं पर भी एफआईआर लॉन्च नहीं है, वैसा ही एक वायरस कोविड-19 वायरस है। तो जो डॉक्टर राहुल पंडित बात कर रहे हैं कि जब आप वो थाइमस ग्लैंड जो कर्मचारी बैठ के एफआईआर लिखते हैं, तो जब रिकॉम्बिनेंट आरएनए वैक्सीन बन सकता है, रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स बन सकती हैं, तो रिकॉम्बिनेंट थाइमोसिन अल्फा का हार्मोन क्यों नहीं बन सकता? सो वो हार्मोन जो हमारे बचपन में एफआईआर लिखता है, उसको अगर रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बना के दे दिया जाए, तो वो जल्दी से हमारे यहाँ एफआईआर लिखेगा कोरोना वायरस की, और वो वही काम करेगा जो बचपन में अगर कोरोना थाइमस होता तो वो करता। तो जब एक चोर मेरे घर में घुसता है, तो एक वायरस समझ लीजिए, उसने मेरी सेल के अंदर में फोटोकॉपियर मशीन को हाईजैक कर लिया और अपने प्रोटीन बनाने चल दिए। जैसा शोरूम होता है, सेल का भी एक शोरूम होता है। सेल की सरफेस में अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वो आके अटैच हो जाता है। MH1 सेल्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर CD8 सेल्स आते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सेल के अंदर में प्रोटीन जो है अपना ना बन के, इसके अंदर में जो प्रोटीन है वो वायरस का बन रहा है, वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। दोनों में लड़ाई होती है, लिम्फोसाइट्स भी मरते हैं, CD8 सेल्स भी मरते हैं। CD4 उनकी हेल्पर नाम है, हेल्प करने आता है, दोनों मरने चालू हो जाते हैं। वायरस की और CD8 सेल्स के अंदर में डायरेक्टली भी वायरस CD8 सेल्स को मारता है। जब इनको मारता है तो इन द मीन टाइम वायरस को पता लग जाता है कि CD8 सेल्स मेरे सरफेस में बड़े बड़े प्रोटीन बाहर शोरूम में रखे हैं, तो जल्दी आएंगे, तो वो अपने प्रोटीन को छोटा कर लेता है। जब वो छोटा कर लेता है तो NK सेल्स, जिसे CD3 सेल्स कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, वो आके वायरस को मारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में CD8 सेल, CD4 सेल और NK सेल्स कम हो जाते हैं। जब वो कम हो जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो साइटोकाइंस हमारे हैं जो निकल रहे हैं वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, और जब वो रिस्पॉन्स साइटोकाइंस टेक ओवर कर लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, फिर वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। अगर हम शुरू में ही CD8 और CD4 की सेना को एक्स्ट्रा दे दे जो बॉडी नहीं दे सकती, तो हम साइटोकाइन स्टॉर्म को बचा सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन के बारे में डॉक्टर राहुल पंडित ने बताया है, पूरे वर्ल्ड में कई जगह ट्रायल चल रहे हैं, इंडिया में इन्होंने ट्रायल किया है। एक और ट्रायल है जिसके बारे में हम फिर आपको किसी और के साथ मिलवाएंगे, जिन्होंने माइल्ड केसेस के अंदर में सेम ट्रायल चल रहा है कि माइल्ड केसेस में क्या होगा। सो बात तो बनती है, हम कर क्या रहे हैं? हमने बेरिसिटिनिब के अंदर में किया क्या कि साइटोकाइन के बेस को बंद कर दिया। मेलाटोनिन से हमने क्या किया? मेलाटोनिन से हमने बायोलॉजिकल रिदम को ठीक कर दिया। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ वही हार्मोन दे रहे हैं जो बचपन में होता है। मीनो, जैसे आप कहते हैं मीनोपॉज हो गया, वैसे आप बोलते हो आदमियों में एंड्रोपॉज हो गया, हम इसको थाइमोपॉज बोल रहे हैं। ये थाइमस हमारे शरीर में जब काम नहीं करता तो आपको आर्टिफिशियल थाइमस की जरूरत है, उसी की ड्रग के बारे में बात कर रहा है। रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से अवेलेबल है, कैंसर्स में काम कर रहा है और डिमॉन्स्ट्रेबल है। CD4 CD8 सेल बढ़ाता है। इसका काउंटर पार्ट है न्यूपोजन, जो हम पॉलीमॉर्फ बढ़ाने के लिए रूटीनली कैंसर के अंदर में देते हैं। जब न्यूट्रोफिल कम हो जाए तो न्यूट्रोफिल बढ़ा दो, और जब उसको कैंसर के अंदर में हर पेशेंट में कीमोथेरेपी में दिया जाता है, और जब हमें मालूम है कि यहाँ पे CD8 सेल कम हो रहे हैं और उसको बढ़ाने की दवाई कैंसर में अवेलेबल है, तो क्यों ना बढ़ा के देखे? बात तो बनती है। जैसे ही इनकी स्टडी पब्लिश होगी, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा न्यूज पूरे वर्ल्ड में जाएगा कि एक नई दवाई का ट्रायल भारत में हुआ। ऐसा ही एक ट्रायल चाइना में भी चल रहा है। दिस मे बी ए गेम चेंजर इन सिवियर केसेस। My discussion now, Rahul, to you is
क्योंकि ये दवाई CD4 एंड CD8 सेल्स बढ़ा रही है। हाँ सर। CD4 एंड CD8 सेल्स एक हफ्ते के अंदर, अनलेस द पेशेंट इज वेरी सीरियस, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ये सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे में काउंट्स कम होना चालू हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द डे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे, जिस दिन आपको लगा कि लिम्फोसाइट काउंट 1000 से कम हो रहा है, इसकी सिंगल डोज इंजेक्शन दे दिया जाए, जो कि माइल्ड केसेस के लिए है। वाई शुड वी वेट कि इतने कम हो जाए, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए, तब जाके इसको दे? तो क्यों ना हम इसको 1.6 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली, जैसे हम TLC में देते हैं, जैसे हम न्यूपोजन को देते हैं, इतना कम हो जाए दे दो। और वहां तो प्रिवेंटिव भी देते हैं कि कीमोथेरेपी से पहले दे दो, ताकि वो सप्रेशन ही ना हो। तो आज की डेट में क्यों ना हाई रिस्क केसेस में, क्यों ना हम 1.6 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है घर में पेशेंट अपने आप खुद ले सकता है, लिम्फोसाइट्स बढ़ने के बाद में नुकसान नहीं करेगा, और ये इंटरफेरॉन गामा भी बना रहा है, इंटरफेरॉन अल्फा भी बना रहा है, तो वो तो शुरू के अंदर ही काम करेंगे। सो इन हाई रिस्क केसेस, वाई कांट वी थिंक ऑफ, इवन मैं तो बात आऊंगा वैक्सीन के बारे में भी, जिन लोगों के वैक्सीन नहीं बन रहे, या जिन लोगों को इससे तो शायद एंटीबॉडीज भी ज्यादा बने, क्योंकि CD8 सेल्स हमारे, जो जब FIR लॉन्च हो जाएगी तो मेमोरी B सेल भी जल्दी बनेंगी, तो उसके हिसाब से जो है एंटीबॉडीज भी ज्यादा बनेंगे। सो मेरा ये मानना है कि इसका रोल अर्ली केसेस में और ज्यादा आएगा। सर राहुल जी। आपने बिल्कुल सही कहा सर। अ, मैं जब भी ये पेशेंट्स आईसीयू में देखता हूँ, तो जनरली जो अधिकांश पेशेंट जो है वो दूसरे हफ्ते में आते हैं आईसीयू में। पहले हफ्ते में बहुत कम पेशेंट्स आते हैं। सिर्फ वही आते हैं कभी कभी जिनको की बहुत हाई रिस्क हो और उनको कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा हो। पर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसका जो रोल है, हमको सीवियर पेशेंट्स में तो है ही रोल, पर मेरे ख्याल से माइल्ड पेशेंट्स में इसका रोल बहुत ज्यादा है। अगर हम माइल्ड पेशेंट्स, हाई रिस्क कैंडिडेट्स और जिनके की लिम्फोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट 20% से कम हो रहे हैं, उनमें एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 1.6 मिलीग्राम का देने में कोई हर्ज नहीं है सर। बहुत सेफ इंजेक्शन है। और इससे अगर हमारी काउंट्स बढ़ती है, लिम्फोसाइट काउंट्स अगर हमारी ड्रॉप नहीं होती है, CD8 काउंट्स हमारी बढ़ती है, तो अधिकांश पेशेंट्स जो है वो साइटोकाइन स्टॉर्म को, जो हमारा डर है या जो हमारा रिलीज होता है साइटोकाइन, उसमें भी शायद नहीं जाएंगे। और ये जैसे मैंने बताया आपको कि एक डॉक्टर है जो कि माइल्ड पेशेंट्स में भी कर रहे हैं ये, आपने भी बताया अभी। तो ये उनकी स्टडी को भी देखना बहुत जरूरी होगा। उनकी शायद स्टडी मुझसे बड़ी है, क्योंकि सीवियर पेशेंट्स में मैंने अभी सिर्फ एक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल की है। पर माइल्ड केसेस में जरूर इसका फायदा होगा, ये मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ। क्योंकि पूरा जो ये खेल नहीं बोल सकते, पर पूरा ये जो प्रॉब्लम है वो इन टी सेल्स की वजह से है और लिम्फोसाइट्स की वजह से है। अगर हम उसको किसी तरह से रोक सके या इम्प्रूव कर सके, तो शायद पेशेंट्स का आउटकम बहुत अलग होगा। जब हम न्यूपोजन देते हैं, जब हम देते हैं न्यूपोजन जैसी दवाइयां जो कि ग्रेनुलाइट Stimulation। CSF है, दैट इज ए कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, हम कैंसर में देते हैं, तो वहां पे तो सिंगल इंजेक्शन भी काम करता है सबक्यूटेनियसली। हाँ तो यहाँ पर भी करेगा क्या सिंगल इंजेक्शन, SOS सर। इंजेक्शन? GCSF जो है उसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी है, और इस वजह से उसका उसका जो है वो शायद इफेक्ट जो है कई दिनों तक चलेगा। थाइमोसिन अल्फा की हाफ लाइफ बहुत लंबी है नहीं सर, बिकॉज ये नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन है। तो इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी है। 6 साढ़े 6 घंटे के बाद इसका जो है हाफ लाइफ हो जाता है। तो हमको अगर इसको स्टिमुलेट करना है, तो माइल्ड केसेस में डेली स्टिमुलेशन की जरूरत होगी। तो इसलिए 5 से 7 दिन अगर हम लोग दे रोज, तो इट विल बी बेटर। एंड क्रिटिकली इल पेशेंट में हम उसका काउंट, इसकी इफेक्ट जो है हाफ लाइफ से कम रखना चाहते हैं, इसलिए हर 8 घंटे में डोसेज दिया है क्रिटिकली इल पेशेंट का, ताकि हम उसकी हाफ लाइफ जो है कम होने ना दें। सो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं इसको लेके चल रहा हूँ वायरस रेप्लिकेशन के लिए, because ultimately when the virus is active, then only there is a role of CD8 cells. Once there is a inflammatory response, then CD8 का सेल्स का उतना बड़ा रोल नहीं है,
क्योंकि एक बार जब इंटरफेरेंस ने टेक ओवर कर लिया और अल्टरनेटिव पाथवेज NLRP के और बाकी सारे पाथवेज आ गए, तो उस सिचुएशन के अंदर में हमारा क्राइटेरिया होगा कि 7वें दिन तक अगर TLC नहीं बढ़ा या फिर आपका लिम्फोसाइट 20% से ज्यादा गिरा एक दिन में, या फिर आपका लिम्फोसाइट काउंट 1000 से कम है, उस सिचुएशन में आप 1.6 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, भाई ये भी ट्राई करके देख लो। ये पब्लिक डॉक्टरों से बात कर सकती है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में शेयर डिसीजन है जहां पब्लिक और डॉक्टर मिलके डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये अभी DCGI ने इसको अप्रूव नहीं किया है, तो ये ऑफ लेबल यूज कहलाएगा। ऑफ लेबल का मतलब है जहां पे पेशेंट की कंसेंट जरूरी है, जहां पे एविडेंस पेशेंट को दिखाए जाते हैं और पेशेंट के साथ में कंसेंट जरूरी है। और कुछ दिनों पहले हमारे को डॉक्टर रसल रिटर जो आए थे, उन्होंने कहा था, और हमारे जो उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज जो नुकसान नहीं करती और फायदा कर सकती है तो उसे दे देना चाहिए। भगवत गीता में भी यही कहा गया था, ऐसा झूठ जो किसी का नुकसान ना करे लेकिन किसी का फायदा कर दे तो बोल देना चाहिए। तो उसी हिसाब से ऐसी कोई दवाई जो किसी का नुकसान ना करे, जैसे डॉक्टर राहुल पंडित ने बताया है, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स ए नेचुरल हार्मोन, इट्स ए ट्रांजिएंट, यू आर नॉट गिविंग इट परमानेंटली, द हाफ लाइफ इज वेरी शॉर्ट, यानी कि अगर आपने इंजेक्शन दिया तो 24 घंटे में इसका एक्शन खत्म हो गया। और अगर ये आपके लिम्फोसाइट्स को बढ़ा देता है, एक पर्टिकुलर टाइप की आर्मी को बढ़ा देता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है और बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो आई थिंक डॉक्टर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या पब्लिक जो इस प्रोग्राम को देख रही है, इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो लास्ट एक हफ्ते में 3 चीजें हमने ऑप्शंस आपको दी हैं, ये भी ट्राई करके देख लो। रिमेंबर, द टाइम इज टू क्रिएट एविडेंसेस, नॉट टू लुक एट द एविडेंसेस। पूरी दुनिया इस वक्त में लगी है एविडेंसेस क्रिएट करने के लिए, ना कि हम पहले कोई दूसरी कंट्री ट्राई करें तब हम करेंगे, तब तक तो हमारे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। समय समाप्त हो रहा है, जाते जाते मैं राहुल जी से कहूंगा कि 5 पॉइंट्स बताएं ताकि हम उस 5 पॉइंट्स को अलग से वीडियो बना के सब जगह पे वायरल कर सके। राहुल जी। जरूर। तो थाइमोसिन अल्फा ये एक नेचुरली अकरिंग थाइमस ग्लैंड ने बनाया हुआ हार्मोन है, और इस हार्मोन को जो है हमारा शरीर 8-10 साल की उम्र के बाद कम कर देता है बनाना, और यही हमने रिकमेंडेड तरीके से यूज किया है। और इसकी जरूरत इसीलिए पड़ रही है कोविड-19 में, क्योंकि हमारे जो टी सेल्स हैं और हमारे जो CD4 और CD8 काउंट्स हैं वो कम होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे लिम्फोसाइट काउंट्स भी कम होते हैं। और इन काउंट्स को बढ़ाने के लिए अगर हम इस दवाई की इस्तेमाल करें तो हमारा जो है वायरल रेप्लिकेशन के फेज में वायरल रेप्लिकेशन भी कम हो जाएगा, हमारा जो है इम्यून रिस्पॉन्स वो भी शायद काफी ब्लंटेड आएगा। और हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये यूज करने 7 दिन अगर इसको हम लोग क्रिटिकली इल पेशेंट्स में यूज करें तो इससे जो है CD4, CD8 और लिम्फोसाइट काउंट बढ़ती है। तो ये दवाई जो है बहुत सेफ है। ये दवाई इस वक्त जो है रीपर्पस्ड है कि हम दूसरे किसी इंडिकेशन के लिए इसके लिए FDA ने अप्रूव किया है, और हम इसको कोविड-19 में यूज कर रहे हैं। जब भी आप यूज करें तो आप पेशेंट की कंसेंट जरूर लें। सेफ्टी में इसका कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक इंजेक्शन साइट पे जो है थोड़ी बहुत रेडनेस आती है जो कि 24 आवर्स में खत्म हो जाती है। धन्यवाद। So just to say, a 28 amino acid हार्मोन प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से जिसका इस्तेमाल किया जाता है, नुकसान नहीं है, फायदा हो सकता है। क्या फायदा दिखाया गया है? यस, एक स्टडी भारत में आ चुकी है जिसके अंदर में इसका फायदा देखा गया है। देन व्हाई नॉट डू इट? रिमेंबर, इट इज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर एंड नॉट ए इम्यूनोसप्रेसेंट। दोनों में फर्क आपको आना चाहिए। इम्यूनोसप्रेसेंट है जो आपकी इम्यूनिटी को कम कर रहा है,
आपकी पुलिस को कम कर रहा है, उसको दबा रहा है, और इम्यूनो मॉड्यूलेटर है जो आपकी पुलिस की वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है और उसको रीअरेंज कर रहा है ताकि लड़ाई जीत सके। जब प्लानिंग करते हो उसी इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना को, दैट इज इम्यूनो मॉड्यूलेशन. So this is a new immunomodulator which we have brought it for discussion. Thank you, Dr. Rahul Pandit, to be here with us, and all my audience who are here with us. We'll be back tomorrow, 7 p.m. with another show. Keep watching Med Talks with Dr. K.K. Agarwal. Stay tuned. Namaskar. धन्यवाद सर, नमस्कार.